Good evening, everyone. Welcome to Unacademy. Hello, everyone. Okay, guys. So in this video, this is the part 2 of solution to CAT 2017. So we are solving slot 1, that is CAT 2017 का slot 1 के questions हम कर रहे हैं. Part 1 में मैंने 4 set cover किए थे. So in today's session, we are going to cover 2 more sets from CAT 2017. So guys, let's begin. Those who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself, guys. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams like CAT, SNAP, CT and all. So I do teach the students for MBA entrance, quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So simple agenda for today's session will be, guys, we'll be solving two interesting sets from CAT 2017. So ये दो सेट्स बिल्कुल तुम्हें अप्रोच बिल्ड करने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे टू टैकल द सिमिलर फ्रंट पे. अगर कुछ आता है तो डेफिनेटली तुम टैकल कर सकोगे एंड रियली अमेजिंग सेट्स. सो लेट्स बिगिन, गाइस. Those who have not yet subscribed to our channel, you can subscribe to our YouTube channel, that is Unacademy CAT4MBA. You can also join us on Telegram channel, that is CAT4MBA, where you'll get the PDF notes for all the sessions that we conduct on Unacademy platform as well as on YouTube. So do join us on Telegram. So guys, these are few amazing plans from Unacademy where you'll get the mock test and support for that is required for the preparation of your CAT and other MBA entrance exams. So I'll recommend the students who are preparing for MBA entrance exam this year, who are going to write this year exam, they can go for the 1 year plan, and those who are planning to write next year CAT, that is CAT 2021, they can go for the 2-year subscription of Unacademy. You'll get the mock test and you'll get the direct interaction with the top educators from India, me, my team, and many other benefits of this subscription, guys. You can avail the 10% of discount if you use this code SHYAM1, SHAM1. So those who are willing to go for the plus subscription, they can use this code to avail 10% of discount. So let's begin, guys. So this is the first set for today's session, set 1. As I said, दो set हमें करने हैं LRDI के. चलो quickly try it. Those who are watching me now, they can quickly drop in the comment. Okay, let's start. Okay, so here's the set. There are 21 employees working in a division, out of whom 10 are special skilled employees, SEs. Thus SEs hai, and the remaining are regular skill employees, that is 11 RE. Thus SE 11 RE. Total 21 employees. Okay, so during the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month. So 5 projects every month complete करने हैं.
Then during the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month. Out of the 25 projects, 5 projects are challenging. So देखो guys, 5 months है, 5 into 5 25 projects है, उसमें से 5 challenging projects है, while the remaining ones are standard. Okay, so each of the challenging projects has to be completed in different months. So every month one challenging project आएगा. Then every month 5 teams T1, T2, T3, T4, T5 work on one project each. So T1, T2, T3, T4 and T5 are allotted a challenging project in the first, second, third, fourth and fifth month respectively. So that's a bit easy, means important clue you can say. ये sequence में है, ये मैं दिया हुआ है, that's much better. Okay, the team assigned the challenging project has one more employee than the rest. मतलब सुनो कि 5 टीम में अगर ये 21 एम्प्लॉयज को डिवाइड करना है तो नहीं होने वाला है. तो अगर ये 20 एम्प्लॉयज 20/4, each team will have 4 each. एंड जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है उसमें 5 एम्प्लॉयज रहेंगे. सो होपफुली यू अंडरस्टूड द टीम कंपोजिशन कैसे रहेगा. देयर विल बी 4 टीम्स विद 4 मेंबर्स ईच, and there will be a team which has 5 members. जिसको challenging project मिल रहा है उसका team composition रहेगा 5 members, right? So that's what you can conclude from this information. So guys, let me know in the comment section if you have any query up till now related to this part of the information that we have just read. So अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, those who are watching me live, they can quickly drop the comment. If you want me to explain any of the point that you didn't understood, you can ask here. Okay, so shall I show you this is just the part of the information. I'll show you the next slide. Okay, so this is the information. In the first month, T1 has one more SE than T2. T2 has one more SE than T3. Total SEs अपने पास 10 है. Okay, then T3 has one more SE than T4 and T4 has one more SE than T5. Again an important clue, the most important you can say. इससे हमें पता ही चल जाएगा कि कितने SEs है फर्स्ट मंथ में. श्योरली आना चाहिए. थिंक अबाउट इट, कैसे आएगा. Those who are watching, quickly drop the comment guys. If you have understood this, give me a thumbs up, all of you. If you understood up till now, quickly give me a thumbs up. Let me know you have understood the information, because it should not be like ki I'll be just I don't want to solve it for you. I want you to try it. Make a point, तुम कुछ सीख के जा रहे हो. Drop the comment, try to interact. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो in between quickly. Okay, so guys, if somebody want to go to the first slide, they can quickly tell me. Then between 2 successive months, the composition of the team changes as follows. So यहाँ पे कुछ rules दिए हैं, team composition change होते हैं accordingly. Let's try to comprehend the information at your own quickly. Okay, so team composition change होने के लिए यहाँ पे 2 rules है guys. The team is allotted the challenging project, जिसमें 5 मेंबर रहने वाले, एक एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी टीम्स में 4 रहेंगे, टोटल 21 लोग थे. Okay, the team allotted the challenging project gets 2 SE from the team which was allotted the challenging project in the previous month. मतलब पहले मंथ में previous month में जिसके पास challenging project था, उस टीम से 2 SEs उस टीम को मिलेंगे जिसके पास next challenging project आने वाला है.
ओके सेकेंड मंथ। सो हमें पता है T1 के पास फर्स्ट मंथ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, T2 के पास सेकेंड मंथ था, T3 के पास थर्ड मंथ आएगा और T4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फोर्थ मंथ में हैंडल करेंगी एंड T5 विल हैंडल द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द मंथ फिफ्थ मंथ. That's the sequence we are already given with that information. If somebody want to take the screenshot of the first slide, they can quickly do it. So this is what we already know. Here we started with the set 1. यहाँ पे सीक्वेंस दिया है T1, T2, T3, T5 allotted challenging project in the sequence first, second, third, fourth and fifth respectively. The team assigned the challenging project has one more employee than the rest. Okay, so team composition भी मैंने बताया था, हर बार टीम composition हर मंथ में 4 टीम ऐसे रहेंगे जहां पे 4 लोग रहेंगे और एक देयर विल बी अ टीम जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैंडल कर रही होगी, उसमें 5 एम्प्लॉयज रहेंगे. So this is what you can comprehend from the information. Next thing, अभी टीम कंपोजिशन कैसे चेंज होने वाला है. The team allotted the challenging project gets 2 SC from the team which was allotted the challenging project in the previous month, and in exchange 1 RE is shifted from the former team to the later team. इसका मतलब क्या, सुनो, वो 2 SCs ले लेंगे जिसके पास 5 एम्प्लॉयज थे, 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रही थी पिछले महीने जो टीम, उसकी टीम कंपोजिशन होगा 5 मेंबर का, उसमें से 2 SCs आ जाएंगे जो टीम नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली है उसमें से, तो एक रिप्लेस हो जाएगा, तो इधर 5 और उधर 4 हो जाएंगे. राइट, डन. देन एक और चेंज होता है आफ्टर द अबव एक्सचेंज. ये फर्स्ट कंडीशन चेंज करने के बाद, इफ T1 हैज एनी SC and T5 has any RE, then 1 SC is shifted from T1 to T5 and 1 RE is shifted from T5 to T1. So basically एक SC RE से वो इंटरचेंज कर लेंगे अगर T1 के पास SC है तो. राइट, T1 and T5 अपना चेंज करेंगे. Then if T2 has SC and T4 has any RE, then SC is shifted to T2 and T2 to T4 and T4 से एक RE जाएगा T2 में. अगर T2 में SC है तो ही ये चेंज होगा. राइट, ओके. सो ये सिंपल फंडा है. ओके, each standard project has a total of 100 credit points, and while each challenging project has a total of 200 credit points. The credit points are equally shared by the employees included in that team. Right? Any query, guys, up till now? If you have any thing that you want, you are not able to understand anything, you can quickly tell me. Okay, all clear up till now, so we can move ahead. So we have the first question: the number of teams in which the composition of the number of times in which the composition of team T2 and the number of times in which the composition of team T4 remain unchanged in the 2 successive months are. So the problem is we need to get the team composition sorted out and we need to represent the information in a proper structured way, then only you will be able to solve this question. Now this is going to be a really challenging question if you don't put the information in a sorted way, and if you don't understand how to represent the information, then that's going to be a really challenge. Okay, now understand what is happened here is, let's understand T1, T2, T3, T4 and T5. इनके फर्स्ट मंथ में मैं SC और, चलो पहले तो SC लिख देते हैं, SC कितने होंगे और RE कितने होंगे पहले देखते हैं. SC टोटल 10 है, RE तो 11 है अपने पास. राइट, दैट्स व्हाट वी हैव.
there are 10 special skilled employees and there are 11 regular skilled employees, right? अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया है, टोटल एसीज तो गाइस 10 है, पांचों टीम मिला के। यहां पे एक इंफॉर्मेशन ऐसा है कि फर्स्ट मंथ में T1 में जितने, T1 हैज वन मोर एससी देन T2, T2 हैज वन मोर देन T3, T3 हैज वन मोर एससी देन T4, T4 हैज वन मोर एससी देन T5। तो हम एक काम करते हैं, T5 की बात है ना, क्या मैं कह सकता हूं T5 में अब टोटल तो 10 ही है, एक बढ़ते जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर जिनका एडिशन 10 है। अगर तुम्हें ये समझ में आता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट। ओके, अगर यहाँ पे 1 एम्प्लॉय तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पे 4 एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज होंगे। एड ऑल दीज नंबर्स, कितना होता है गाइस? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो 15 हो रहा है। यहाँ पे तो 10 ही एसीज है, ऐसे कैसे हो सकता है? So how is it possible? The only possible way to get this is you have 0 employees in T5, 0 special employees in the first month in T5. Then यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, and that's the get through this puzzle. अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फॉर श्योर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम सीधा बता सकते हो गाइस, T1 ऐसी का टीम है जो फर्स्ट मंथ स्पेशल प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, मतलब उसमें फॉर श्योर 5 लोग होंगे, बाकी सारे टीम में 4 लोग होंगे, टोटल 21 में से। तो एसीज हमको पता चले तो एक आरई इसमें होगा, 4 + 1 5, देन यहाँ पे एक आरई होगा, 3 + 1 4, यहाँ पे 2 आरईज होंगे, 2 + 2 4, यहाँ पे 3 आरई होंगे, 1 + 3 4, और ये जो T5 होगा इसमें चारों भी रेगुलर एम्प्लॉइज होंगे, रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉइज। दैट्स व्हाट यू कैन कंक्लूड। सो दिस इज द लाइन। ये लाइन दो लाइन थे जिसमें क्लियरली पता चल जाता है कि फर्स्ट मंथ का टीम कंपोजिशन क्या था। अब अगर तुम्हें फर्स्ट मंथ का टीम कंपोजिशन पता चल गया तो तुम सेकंड मंथ का टीम कंपोजिशन बना सकते हो। सुनो कैसे बना सकते हो सेकंड का टीम कंपोजिशन। अभी सेकंड मंथ में क्या होगा, यहां से T2 के पास आ जाए, पहले T1 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, अभी नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन करेगा? T2 में 2 एससी तो यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट है। तो यहाँ पे 2 एससी है तो इधर आ जाएंगे 2 एससी, तो T2 में टोटल हो जाएंगे 5 एससी और एक उनका रेगुलर एम्प्लॉय। यहां से 2 एससी उधर चले गए तो यहाँ पे 2 बचे। अच्छा नहीं, हमें क्या करना था गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट अगेन। 2 एससी, चलो पहले एससी ट्रांसफर कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट एक आरई उनको एक्सचेंज में मिलेगा T1 को, राइट है। The team allotted challenging project gets 2 assists from the team which was allotted a challenging project in the previous month. In exchange, 1 RE is shifted from the former team to the later team. इसका मतलब इन्होंने 2 SC इधर लिए तो एक एम्प्लॉय इनका RE उधर जाएगा, एक RE इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 REs हो जाएंगे, हो गए इधर 4, राइट, और यहाँ पे हो गए 0 REs। देन अभी क्या करना है तुम्हें, T1 में अगर अभी कोई एससी बचता है, बी पे आ जाओ, ये ए हो गया, अभी बी पे आ जाओ। T1 में अगर कोई भी एससी बचता है, बचा है क्या? हाँ, तो T1 में 2 एससी बचे हैं, वो एक्सचेंज होंगे T5 के साथ, और T2 में अगर कोई एससी है तो वो एक्सचेंज होगा T4 के साथ। एससी को तुम आरई से एक्सचेंज करोगे, इधर का एससी ले लो, उधर एक आरई डाल दो, तो यहां से जब तुम एक्सचेंज करोगे T5 के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एससी, यहाँ पे हो जाएगा 1 एससी, इधर एक आरई ऐड हो जाएगा, इधर 3 आरई हो जाएंगे, नंबर विल रिमेन सेम, टोटल सेम ही रहने वाला है। वो सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, स्पेशल एम्प्लॉय, एक रेगुलर एम्प्लॉय देके एक स्पेशल एम्प्लॉय ले रहे हैं, T5 वाले और T4 वाले। ओके, सो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ये 4 रहेंगे, फिर T2 और T4 भी अपना एक्सचेंज कर लेंगे, एससी और आरई। तो T2 में एससी है तो ये इधर चला जाएगा, अभी 3 एससी इनको मिले थे बट वो पूरे नहीं मिलेंगे, इसमें से एक इधर एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और ये जो 5 हो गए थे ये वापस 4 हो जाएंगे, एक कम हो गए, और इनके पास वापस से एक आरई आ जाएगा यहाँ से, जो 1 3 था यहाँ पे 2 2 हो जाएगा,
एंड दिस रिमेन्स सेम, 2 रहेगा यहाँ पे. सो दिस इज द टीम कंपोजिशन इन सेकेंड मंथ, SE और RE. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस, ये कैसे हुआ, राइट. अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिख देता हूं मैं. आई जस्ट पुट ऑल द थिंग्स इन अ बिट स्ट्रक्चर्ड वे. देखो, पहले हमें पता था कैसे सॉल्व हुआ. आई वंस अगेन एक्सप्लेन इट दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड. हमें ये पता चला कि फर्स्ट मंथ में ये जो ऐसी थे एक एक करके ज्यादा है इस में कंसेक्यूटिव नंबर, तो एक ही पॉसिबिलिटी थी 0 1 2 3 4. देन T1 के पास स्पेशल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे 1 आ रही होगा तो ये 5 हो जाते हैं, यहाँ पे 1 आ रही होगा. बाकी सब में 4 एम्प्लॉयज होंगे, तो ये 2 और ये 3 और ये 4. फिर 2 एससीज इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे 5 हो गया. एक आरई एक्सचेंज में उनको दिया जाएगा, तो यहाँ पे 0 आरईज हो जाएंगे. यहाँ पे 2 एसई और 2 आरई. ये चेंज होने के बाद ये जो है 1 3 था और ये 0 4 था. ये हुआ आफ्टर ए. उसके बाद हमें बी जब अप्लाई करेंगे तो T1 और T5 एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पर एक आरई एक्सचेंज किया जाएगा, यहाँ पे 3 आरई बचेंगे और यहाँ पे भी हो जाएंगे 3 आरई. हो गए. देन T2 और T4 अपना एक एससी एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे 4 एससी हो जाएंगे, यहाँ पे 2 एससी होंगे, यहाँ पे एक आरई इनको मिल जाएगा 1 आरई, और यहाँ पे कितने आरई थे, 3 थे, तो यहाँ पे 2 आरई बचेंगे एंड दिस विल बी 2. तो 10 विल बी द टीम कंपोजिशन. अगेन टोटल करके देखो, ये 10 ही आएगा और ये 11 ही आएगा. एवरी टाइम इट शुड हैपन दैट वे ओनली. ओके, फिर अभी करते हैं T3 से, T2 से लेके T3 में कैसे चेंज होगा. सुनो, अभी स्पेशल प्रोजेक्ट हैंडल कौन कर रहा है, T2. नेक्स्ट मंथ कौन हैंडल करने वाला है, T3. अगर T3 हैंडल करने वाली है तो इसको 2 एम्प्लॉयज दे दो यहां से, इसमें हो जाएंगे 4 2, एक एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा. और T2 में एक आरई ऐड हो जाएगा, 2 आरई और 2 ऐसे चले गए यहां से, 2 बचे. राइट, ये एक्सचेंज हो गया. आफ्टर दैट ये बाद में करते हैं, पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूं फिर हम एक्सचेंज करते हैं. 2 2 देन 1 3, ये हो गया. फिर T1 और T5 अपना एक्सचेंज करेंगे. पहले इधर ऐसी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं. यहाँ पे 0 ऐसी हो जाएगा, एक आरई ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐसी हो जाएगा और एक आरई कम हो जाएगा. इन दोनों ने एक्सचेंज किए. T2 और T4 अपना एक्सचेंज करेंगे. T2 और T4 अगर एक्सचेंज करते हैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. In this case, there won't be any change, right? Sorry, एक SC T5 में T4 में जाएगा. Sorry, there will be a change. यहाँ पे 1 SC बचेगा, यहाँ पे 3 SC हो जाएंगे और एक RE उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक RE बचेगा, यहाँ पे 3 RE हो जाएंगे. Okay, so that will be the change. After that, after this is done, next month क्या होगा. T3 के पास अभी प्रोजेक्ट था चैलेंजिंग, अभी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जाएगा T4 में. तो टीम कंपोजिशन कैसे चेंज होगा, यहां से 2 एम्प्लॉयज इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे 5 एससी हो जाएंगे, एक आरई उधर चला जाएगा, 0 आरई हो गए, तो यहाँ पे 2 एससी और 2 आरई ऐसा हो जाएगा. ये आरई इधर शिफ्ट हो गया T4 में. राइट, आफ्टर दैट यहाँ पे 1 3 0 4 में लिख देता हूँ सारे वैसे के वैसे. 2 2, अगर T1 में एससी है तो इधर जाएगा, ऐसी तो है ही नहीं T1 में, सो नीड नॉट टू टेक दैट. एंड अगर T2 में यहाँ पे चला जाएगा और इंडियन उनके पास आरई इधर जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज इसमें से आरई तो शिफ्ट हो गया है. नाउ लुक एट दैट कंडीशन. क्या कंडीशन था, आफ्टर दिस चेंजेस, आफ्टर द अबव एक्सचेंज, इफ T1 हैज any SE and T5 has any RE, then 1 SE is shifted to T1. ये देखो, if T2 has any SE, T4 has any RE, ये दोनों होना चाहिए. अब नहीं है तो नहीं कर सकते, राइट. तो as simple as that. तो लास्ट मंथ में क्या होगा, सिंपली ये चेंज हो जाएगा. यहाँ पे तो अभी RE SE है नहीं, तो प्रॉपरली वैसे ही चलेगा. T5 के पास ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ जाएगा. T5 के पास अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आता है तो 2 एससी इधर आ जाएंगे, 4 एससी हो जाएंगे, एक आरई इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक ही बचेगा, यहाँ पे 3.
right? And the next thing will be 2 T4 T5 में हुआ, ये 2 2 रहेगा, ये 1 3 रहेगा और ये 0 है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, नीड नॉट टू एक्सचेंज, यहाँ पे ऐसी है। सो यहाँ पे अभी ऐसी है और यहाँ पे RE भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, T2 और T4 को चेंज कर सकते हैं। So this team will have 0 SE, this team will have 5 SE and 0 RE, यहाँ पे हो जाएंगे 4। This cannot be interchanged। तो हमें फाइनली ये मिल रहा है, this is the team composition after 4 months, means 5th month, right? 5th month में ये composition रहेगा। So this is the final arrangement of the team, and definitely once you understand the question, ये question definitely करना ही चाहिए solve, अगर तुम्हें समझ में आता है तो। The number of teams, the number of times in which the composition of team T2 and the number of times in which the composition of team T4 remained unchanged in 2 successive months। तो T2 कितनी बार अनचेंज रहा और T4 कितनी बार अनचेंज रहा। सो T2 अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे तो चेंज हो गया, इधर 4 थे, इधर 3 हो गए, 5 हो गए, यहाँ पे 1 3 हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे 1 3 हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। सो दिस इज द मंथ जब T2 चेंज नहीं हुआ है। एंड T4 अनचेंज कब रहा, T4 1 3 था, 2 2 था, 3 1 था, 5 0 था, 4 0। T4 तो हर बार चेंज ही हुआ है, सो इट इज 1 0, दैट इज आंसर ऑप्शन बी, राइट? The next thing, the number of SC in T1 and T5 for the projects in the 3rd month are respectively। T1 और T5 में SC चाहिए हमें 3rd month में। 3rd month T1 और T5 के SC अगर देखोगे 0 and 2। You can simply answer it, that's very easy now। Which of the following cannot be the total credit points earned by any employee from the projects? Which of the following cannot be the total credit points ओके सो हमें पता है स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 200 पॉइंट्स मिलते हैं, किसी ने स्पेशल प्रोजेक्ट किया होगा x टाइम्स एंड 100 पॉइंट मिलते हैं y के लिए, और ये टोटल क्या नहीं हो सकता है, हमें ये पूछा है। सो स्पेशल प्रोजेक्ट तो टोटल 5 ही है, रेगुलर प्रोजेक्ट टोटल हर एम्प्लॉय ने 5 प्रोजेक्ट किए होंगे। सो हाउ कैन आई गेट 150 200 लाइक दिस? Sorry, not 200, because a team gets 200 points and those points are divided into 5 employees, sorry। So an employee who is doing special project only 40 points at max, and the team who is handling the standard project, there will be 4 employees in it, so 25 points per employee hoga। So 40x plus 25y, this can be the total points of any employee, depending on x is the number of this challenging project he is handling and y is the number of standard project he is handling। तो अगर किसी ने 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं तो 40 into 5 हो सकता है, 40 into 5 200 points, y can be 0, right? Then if somebody is handling just
लेट्स ट्राई दिस वन. इसमें से कौन सा हो सकता है ये हमें ट्राई करना है बेसिकली. सो विच इज नॉट पॉसिबल. सो 40 into 5, 200 is possible. After that, if you try this, 40 into 120 and 25 into 2, 50. 50 plus 150, 170 is also possible, 200 is possible, 170 is possible. These are possible. 1, 200, 170, 150. Can we get the 150? Oh, we can have 40 into 4, 160 plus 25. 185 is also possible. देखो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मैक्सिमम 5 कर सकता है, फिर 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, चलो सारे काम कर सकते हैं, 2 भी कर सकता है. 40 into 2 is 80 and 25 into 3 is 75. It can be 155. So we need 140. कैसे आ सकता है चेक करना है. It can be 40 into 1, 40 पॉइंट हो जाते हैं, and 25 into 4 हो गए 100 पॉइंट्स. 140, 140 भी हो सकता है. That is possible. This is possible. This is possible. So this is the number which is not possible. 150 तुम नहीं ला सकते हो. So this cannot be the total point. Then we have one more question based on this. One of the employee named Anik scored 180 point. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था guys 180 point कैसे आ सकते हो. 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किए होंगे एंड 1 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट किया होगा. इट्स क्वाइट सिंपल. 40 into 4 and 25 into 1. So that's how one can score total 185 points. So if we score 185 points, that must be 4 challenging project and 1 standard project only. So वो हमेशा कहीं ना कहीं मूव करके जाके चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाले टीम में जा रहा है. तो क्या हम कह सकते हैं कि वो T1 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बोला है. ओके, कैन नॉट बी T1, T2, T3, T4 हो सकता है क्योंकि सीक्वेंस में T1 से वो मूव होगा T2 में. इट इज पॉसिबल T2 से T3 में मूव होगा, T3 से T4 में मूव होगा. डन. देन उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कर लिया होगा. इट इज पॉसिबल. सो दिस मे बी दिस इज पॉसिबल. ओके, let's go ahead with the next one. Next answer option is T1, T2, T4. देखो T1 से कोई बंदा T2 में ट्रांसफर हो सकता है, फिर T2 से T4 में एक्सचेंज होता रहता है. क्योंकि देखो हमें पता है कि कंडीशन वाइज T1 T5 वाले के साथ एक्सचेंज होते हैं, T2 T3 T2 T4 वाले के साथ एक्सचेंज होते हैं. राइट. तो हो सकता है T2 और T4 में एक्सचेंज हुआ होगा, फिर उसने T4 के बाद T5 में मूव हुआ होगा, फिर उसी में रह के उसने लास्ट मंथ में किया हो सकता है. सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल. यहां से वो यहाँ पे T4 में मूव हुआ इज पॉसिबल. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल. एज पर द गिवन कंडीशन कोई पर्सन T1 में है वो T2 में जा सकता है, और T2 से सीधा T4 में जा सकता है, T3 में भी जा सकता है. ओके, नेक्स्ट वन इज T2 में उसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया होगा. Anik would work only in teams T2, T3, T4, T5. Is it possible? T2 में हो सकता है उसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया, फिर T3 में किया, फिर T4 में किया, फिर T5 में किया. राइट, इट इज पॉसिबल. तो पहला प्रोजेक्ट उसका स्टैंडर्ड रहा होगा, फिर वो हर बार T2 से T3 से T4, T4 से T5,
It is also the possible answer. Next thing, Anik worked only in teams T1, T3, T4, T5. अब सुनो, यहाँ पे T1 में उसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया, हम बोल सकते हैं. फिर T1 से अगर उसको ट्रांसफर होना है तो वो T5 में जा सकता है, राइट. बट T3 में कैसे जाएगा? T3 में तो जाने का कोई चांस ही नहीं है. फिर T1 और T5 में एक्सचेंज होता रहेगा. फिर आगे तो नहीं जा सकता, इधर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. Right, that's the simple question. Can have. So we have one more set to do today. Let me quickly know if there is any query related to this. Let's move to the set 2 of today's session. Quickly try to comprehend the information at your own. If you are not able to comprehend, let me know in the comment section, guys. Okay, so this is the question related to simple happiness index of a country. So SHI, a simple happiness index of a country, is computed on the basis of the 3 parameters. So first parameter is social support, then freedom of life choice, then corruption perception. That is SFC, right? Then each of these 3 parameters, so this is basically a data interpretation question, and it's an observation based data interpretation question. It's more of observation. Calculations are very simple. You can just tackle, just if you know the basics of number crunching, that's very easy, but a bit logical at the same time. Okay, so let's try. Each of these parameters are parameter is measured on a scale of 0 to 8, integer only. A country is then categorized based on the total score obtained by summing the score of all the all the 3 parameter as shown in the point table. Okay, so if the country scored 0 to 4, that country is very happy. If the score is low, then the country is happy. Okay, so 5 to 8 score, that means it's unhappy. 9 to 13, it's neutral. 14 to 19 score is happy. Oh, sorry, the low score represent very unhappy, my mistake. So 0 to 4, very unhappy. 5 to 8, it is unhappy. And 9 to 13, it's neutral. And 14 to 19, happy. And 20 to 24 is very happy. So the country who scored the highest point is the happiest one. Okay, so we can move ahead. Okay, what is the other information we have? So we can have a look at the table after, because that's not the table you need to use in the first stage. So you need to go through the remaining part of the information. You can say following diagram depicts the frequency distribution. So this is the frequency graph, and that's what you need to understand, guys, whenever you want to tackle the questions of data interpretation which are of the CAT level. So basic thing, तुम्हारा graph reading अच्छा होना चाहिए. You should know what is frequency graph. You should know the bar graph में ये frequency, those who don't know, I'll explain it from the scratch. Okay, so the following diagram depicts the frequency distribution of the scores of SFC
of 10 countries A, B, C, D, E, V, W, X, Y, Z. That's what I call. That's what I'll call these countries. Then further, the following things are known. That is, A and C jointly have the lowest score of 7 with the identical scores in all 3 parameters. Means A and C are the country who have the same score in S, F, C, and of course the same identical total score. Then Zuma has the total score of 17. Okay, so you can think of 17 कैसे score आया होगा. Points तो 0 to 8 मिलते हैं, maximum 8 मिलते हैं. It could be 8, 8, 7, 8, 8, 16 plus 1. It can be anything, by the way. So all 3 countries which are categorized as unhappy. All 3 countries which are categorized as happy. So happy means the score is 14 to 19. Okay, so जो भी happy countries में categorize किए गए हैं, जैसे 3 countries है, have the highest scores in exactly one parameter. Okay, now understand what is the frequency graph. That's what we were talking about. So first thing, this y-axis represents frequency, means number of times. You can simply say frequency is number of times. Then this is the blue color, which is for S. So parameter S may, and these are the scores. Okay, all we'll talk about this one. यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है frequency 2. इसका मतलब 1 जो है वो 2 बार आया हुआ है. कौन से पैरामीटर में? F पैरामीटर में. F पैरामीटर में क्या क्या स्कोर आए होंगे? 1 2 times, then 2 score 1 time, then 3 score 2 times, then 4 score 1 time, then 5 score 3 times, then we have 6 score आया नहीं है, 7 एक बार आया हुआ. So F category में यही स्कोर किए गए. अब now just count it. Just count it properly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are the scores of 10 countries. इसका क्या है ये नहीं पता, बट हमें ये दिया हुआ है कि स्कोर्स क्या क्या किए गए. So those students who quickly can understand what is the frequency graph, and it's very simple guys. एक बार तुमने आज भी समझ में आया तुम्हें, so definitely it will be very easy if it comes next time. Okay, so we can move ahead with the clues now. So we have these questions. This is the first question. What is the A's score in F? So we'll get to the sub question later. First of all, we'll try to finish it off. So the conditions we have with us is A and C have the same score. मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है. A and C दोनों के टोटल स्कोर 7 होने चाहिए, एंड S में भी सेम, F में भी सेम, C में भी सेम. यहाँ पे भी इनके कैटेगरीज के स्कोर्स भी सेम आने चाहिए जहाँ तक. Then we have Zuma has total score 17, and all 3 countries which categorized as happy have the highest score exactly in one parameter. तो जो भी 3 कंट्रीज हैप्पी कैटेगरीज में आ रहे हैं हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट नाउ. सो लेट्स लुक एट द फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड लेट्स चेक इस कॉलम में एस के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं. सो एस इज दिस वन ब्लू कलर. 1 पॉइंट कभी है इस कैटेगरी में, 2 पॉइंट भी नहीं है, 3 पॉइंट मिले हैं कितने कंट्रीज को? 3 बार. सो इस कैटेगरी में 3 3 3 3 बार होगा. देन ब्लू कलर अगेन 4 स्कोर भी 3 बार है, 4 4 4. देन 5 पॉइंट्स 2 कंट्रीज को मिले होंगे, 2 times 5 आया होगा. देन 6 पॉइंट एक कंट्री को मिले हैं एंड 7 पॉइंट एक कंट्री को. लुक एट दिस 3 3 3 9 + 1 10. तो ये 10 वैल्यूज ही इस कॉलम में आ सकते हैं.
देन एफ के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा भी था पहले, 1 2 बार होना चाहिए, देन 2 1 बार होना चाहिए, 0.3 2 बार मिले हैं, 2 कंट्रीज को 3 पॉइंट मिले हैं, 0.4 एक ही कंट्री मिला है, 0.5 3 कंट्रीज को मिले 5 5 and there is one more country who got the 7 points. And what about C? If you look at the C parameter, that's the green in color. 1 is 1 time, 2 is 3 times. 1 2 2 2. Right. Then 3 points 4 times, 3 3. Then we have green color 4.1 bar and 6.1 bar. Right. So we need to get 17 points for Z. How is it possible to get the 17 points? We need to get 7 points for A and 7 points for C. So how to get the 7 points? It could be यहाँ पे minimum 3 points होगा. It can be 3 plus क्योंकि 0 point तो किसी ने स्कोर भी नहीं किया है, right? There is no 0 point, so it must be at least 1, must be at least 3, this must be at least 1. Okay, so it can be possible. यहाँ पे 1 point तो है minimum, ज्यादा भी हो सकता है. अब यहाँ पे इन दोनों ने सेम किए तो 1 तो नहीं आ सकता है. अगर 1 आया होगा, 1 cannot be here. That's what you can say. It cannot be 1, it cannot be 4, it cannot be 6, क्योंकि यहाँ पे या तो 2 है या तो 3 है, या तो 3 है या तो 2 है, बिकॉज दोनों सेम आने चाहिए. 2 2 और 2 2 आएगा या तो 3 3 आएगा. देन अगर यहाँ पे 2 आ जाता है तो हमें इधर 5 पॉइंट चाहिए. 5 पॉइंट मतलब यहाँ पे फिर 3 + 2 कर सकते हो, बट 2 तो एक ही है, तो फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 + 1, 4 + 1, दैट इज पॉसिबल. अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, दैट्स द पॉसिबिलिटी. 3 पॉइंट्स अगर लेते हैं तो इधर 4 पॉइंट चाहिए. सो 3 + 1, 3 + 1, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. +1 4 + 1 या फिर 3 + 1 3 + 1. सो एनीवेज यहाँ पे तो हमें एक चीज क्लियर है, मिनिमम 3 पॉइंट्स इधर है, 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे तो फॉर श्योर ये 1 1 है. दिस इज 1, दिस इज 1, दैट्स व्हाट वी कैन कंक्लूड. एंड दिस इज 3 + 1 4 + 1 + 2 और 3 + 1 + 3. ये 4 और 3 ही हो सकता है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द क्लूज, राइट. देन आफ्टर दैट हाउ टू गेट द 17 पॉइंट्स. अगर तुम हाईएस्ट पॉइंट्स लेते हो यहाँ से 7 और 6 और 7. Okay, one more clue we have is that all the 3 countries which categorized as happy have the highest score in exactly one parameter. इसका मतलब ऐसे कभी नहीं होगा कि एक ही कंट्री ने इसमें भी हाईएस्ट ला लिया, इसमें भी हाईएस्ट ला लिया, इसमें भी हाईएस्ट ला लिया. अगर तुम इसको हाईएस्ट ले हो 6 पॉइंट, तो तुम इन दोनों को हाईएस्ट नहीं ले सकते हो, तो तुम्हें सेकेंड हाईएस्ट लेना पड़ेगा 6 and 4. दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी. ओके, अगर मैं इसको 7 पॉइंट लेता हूं तो मुझे इन दोनों को 10 लाना पड़ेगा, और 10 लाने के लिए फिर मेरे पास यहाँ पे 5 और 5 तो नहीं है. सो Z कैनॉट बी हाईएस्ट हियर बिकॉज यहाँ पे 7 लिया,
तो ये दोनों मिला 10 नहीं आ सकता है, कैसे भी नहीं आएगा, यहाँ पे 6 तो है नहीं। फिर अगर तुम यहाँ पे 7 लेते हो तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। प्रॉब्लम ये है इस कैटेगरी का हाईएस्ट 4 है, बट दो कैटेगरीज में हाईएस्ट है, एग्जैक्टली वन कैटेगरी में ही हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर। तो एक ही पैरामीटर में हाईएस्ट हो सकता है, तो तुम इसको भी 7 नहीं ले सकते हो, इसको भी 7 नहीं ले सकते हो। तो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल कि इस कैटेगरी में 4 स्कोर किया होगा, इस कैटेगरी में 6 स्कोर किया होगा, दोनों को, इसको मैंने हाईएस्ट रखा। सॉरी, इस कैटेगरी का, जस्ट मिनट, माय मिस्टेक। 1 2 3 4, here is 1 6 also. Yes, so इसमें से हाईएस्ट, ये दोनों तो हाईएस्ट नहीं हो सकते। लेट्स क्रॉस चेक वन मोर टाइम। अगर यहाँ पे 7 लेता हो तो यहाँ पे 10 लाना है, हाईएस्ट वैल्यूज ले लेनी है। तो 10 लाने के लिए फिर हाईएस्ट तो लेना है नहीं, तो 4 और 5 ऐसे कुछ ट्राई कर सकते थे, नहीं हो सकता है। 5 और 3 ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट द हाईएस्ट। तो Z का हाईएस्ट तो होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हैप्पी कंट्री में तो आ रहा है। तो अगर Z यहाँ पे 7 पॉइंट करता है तो इधर दोनों मिला के 10 आ सकते हैं क्या? तो इट इज पॉसिबल 6 and 4, सेकेंड हाईएस्ट यहाँ, इट इज पॉसिबल, ये हाईएस्ट। अगर किसी ने ये ट्राई किया कि मैं यहाँ पे हाईएस्ट लेता हूँ और ये इन दोनों को सेकेंड हाईएस्ट रख के क्या मैं 11 ला सकता हूँ? तो वी कैन गेट दैट ऑल्सो, 5 and 6 रखें, राइट। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ये हाईएस्ट रखा या फिर ये हाईएस्ट रखा, 7 और 6, ये 2 पॉसिबिलिटीज है अपने पास। राइट, so the first question is, what is A score in F? A score in F is definitely 1. The first question is quickly you can answer, that's 1. Let's move to the sub question and solve it. What is Zuma score in S? Now we are supposed to calculate Zuma score in S. Understand one thing, if this is the highest 7, मैंने अभी explain किया था, this is 7, then this must be 6 and this must be 4. That's one possibility. And the other possibility is if this is 6, okay, then this must be 11, so it should be 6 and 5. That's the other possibility. So any in both the possibilities, Zuma score in S remains 6. So that is for sure. So Zuma score will remain 6 in both the possibilities. Right? Let's move to the next question. B and D, 2 countries categorized as happy, are tied with the same total score. What is the maximum score they can have? B and D are the happy country who categorize for the tied for the same total, B and D. If B and D are the happy country, so happy country के लिए हमें चाहिए कम से कम 14 points, 19 points. Now understand, this 6 is already gone. Out of this, either 7 or 5 gone, and this 6 gone. So B and D tied. Just a minute. B and D, 2 countries categorized as happy, are tied with the same total
what is the maximum score they can have. So we'll try to get the score 17, 16, 15, 14. These are the answer options with us. So ऐसा होगा क्या 17 के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 17 ऑलरेडी हो चुका है. अब अगर तुम कुछ भी ट्राई करो, लेट्स से 6, 5 एंड 6 चला गया, 6, 5, 6 गॉन, दिस 6 इज डेफिनेटली गॉन. तो ये अगर 6 और 5 जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 7 के साथ फिर ये 3 ले सकते हैं 10, और उसके साथ ये 5 ले सकते हैं, 15 ला सकते हैं, राइट. 7 सॉरी 4, 7, 4 एंड 5. यहाँ पे हाईएस्ट 5 हो सकता है. 7 और 4 11 प्लस 5 16 हो सकता है. बट द प्रॉब्लम इज फिर क्या मैं इसका हाईएस्ट ला सकूंगा, डी को भी हाईएस्ट लाना है, देन 6 इज गॉन. या फिर हम एक काम करते हैं, फिर यहां से यहां पे ये 7 यूज कर लेते हैं, और यहां से 4 कैंसिल कर देते हैं, और यहां से 6 कैंसिल कर देते हैं, एंड दिस 7 इज कैंसिल. सो नाउ यू कैन यूज 5 नाउ. तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5. देन वी कैन यूज दिस 7. कैन वी मैनेज विद द 7. इसका हाईएस्ट लेते हैं 7. डी के लिए ये 7 हाईएस्ट लेते हैं, एंड लेट्स कंसिडर दिस 6 हाईएस्ट इज गॉन फॉर दिस. ठीक है, आई एम कंसिडरिंग द दिस पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 और 5 गए, और ये 6 गए. तो हमारे पास बचता है 7, 7. सो यहाँ पे 7 लेता हूँ, इसका 7 इधर ले लेता हूँ. देन हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे 7 लेने के बाद मैक्सिमम कैन बी 5. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 अवेलेबल है. हियर मैक्सिमम कैन बी 3, 3. तो लेट्स ट्राई कितने पॉइंट्स हो रहे हैं. 7 प्लस 3 10 प्लस 15 तो हो सकता है, राइट. अब अगर तुम 16 लाने जाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये 7 7 रख के लाया, तो ऑफकोर्स वो तो नहीं आएगा. सो मैक्सिमम पॉइंट्स कैन बी 15. एंड द लास्ट वन, इफ बी स्कोर 16 एंड डी स्कोर 15. अब ये डिफरेंट हो रहा है, बी स्कोर 16 एंड डी स्कोर 15, then the maximum number of countries with the score with the 13 score. Okay, B को 16 स्कोर कर देना है. So we can do it this way. यहाँ पे 7 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं, 7 प्लस 4 11 प्लस यहाँ पे 4. बी 16 एंड डी 15, सॉरी बी 16 चाहिए हमें. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 लेते हैं, 7 गॉन. देन यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 गॉन, 12 प्लस यहाँ पे 4 लेते हैं, ये हुआ 16. देन यहाँ पे डी के लिए हमें चाहिए 15 पॉइंट्स. तो 15 पॉइंट के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट 5 here, 4 here maximum, sorry 4 gone, so maximum 3. 5 plus 3 is 8, and 7 here, 8 plus 7 15. Okay, so here 7, here 5, here 3. It is possible. Okay, so अब इतने पॉइंट्स देने के बाद तुम्हारा 7 ये भी चला गया, यहाँ का एक 5 चला गया, यहाँ का एक 3 चला गया.
तो अभी अगर तुम देखोगे तो 5 + 3 18 हो रहा है, 18 5 + 3 8 हो रहा है, 8 + 5 5 + 5 is 10, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक 5 गया, यहाँ पे एक 5 गया, राइट। देन इधर 6 गया, 7 गया और एक 5 गया। Here it is 4 gone, 6 gone and 3 gone. Okay, so one more thing is यहाँ पे 2 2 जाएगा या तो 3 3 जाएगा, राइट। सो अपने पास 3 तो सफिशिएंट है, यहाँ पे 5 तो कहीं नहीं लगेगा, 5 2 बार चला गया, तो मैक्सिमम 5 प्लस here 5 is gone one time, so 5 plus 5 plus 3, एक कंट्री के लिए तुम 13 पॉइंट ला सकते हो। इसके बाद उसके बाद तो नहीं आना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है, सॉरी। So there can be only one country for which we can get the 13 points. Then what is the maximum number of countries with the score 13? There can be only one. उसके बाद तो चांस ही नहीं है 13 आने का। Look at the values. We will be just left out with 4 4 8 plus 3 11. It cannot be 13 for any other country then. Okay, that's it for the day, guys. You can join us on Unacademy platform. If you want to attend the special session, please go to Play Store and download the app, Unacademy Learning app. Install it. You can use my code SHAM1 to avail the 10% of discount. These are the few amazing plans from Unacademy. So I'll recommend all of you to go for 1 year or 2 year subscription of Unacademy, where you'll get the mock test and the complete support for your preparation. And you'll be interacting with the top educators from India. So for sure recommendation, and use this code SHAM1 to avail 10% of discount. Those who have not subscribed to our channel, please do it, guys. So I'll be solving again a few more questions from 2017 tomorrow, and this week we'll be complete 2017 paper, slot 1 as well as slot 2. And for the PDF notes, you can visit our channel, Telegram channel, that is CAT4MBA. So don't forget to press the bell icon so that you'll be notified about all the live session that is going